Dear students, today's topic is stele. Stele हम किसको कहते हैं? All the tissues inside of the endodermis is called stele. एंडोडर्मिस के जो इनसाइड से होते हैं उसको हम स्टील कहते हैं. ऑल इस तरह लिखेंगे, ऑल द टिश्यूज इनसाइड of the endodermis is called stele. अब इसमें हम देखें स्टील में क्या होता है, क्या क्या होता है. स्टील इंक्लूड्स इसमें पेरिसाइकल, जाइलम, फ्लोएम एंड पिट, और वी कैन से मेडुला. स्टील इंक्लूड्स पेरिसाइकल, जाइलम, फ्लोएम एंड पित्त, और इसका दूसरा नाम है मेडुला. मेडुला. स्टील वाज फर्स्ट इवॉल्व्ड इन टेरिडोफाइट्स. किसमें? फर्स्ट इवॉल्व्ड इन टेरिडोफाइट्स. First evolved in pteridophytes. Concept of stele was proposed by Van Tygem. Concept of stele was proposed by Van, साइंटिस्ट का नाम है वैन टाइगेम एंड ड्यूलिट. साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसके बारे में कंसेप्ट दिया है स्टील के बारे में, वैन टाइगम एंड ड्यूलिट इन 1886 में इसके दिया. All the tissues inside of the endodermis is called stele. Stele includes pericycle, xylem, phloem and pith, or we can say medulla. Stele was first evolved in pteridophytes. The concept was given by Van Tygem and Dewlitt in 1886. Now types of stele. Types of stele. First type, protostele. Protostele is the most primitive and simplest type of stele. Most primitive stele. It's the most primitive and simplest type of stele. इस स्टील में क्या है? इट इज नॉन मेड्यूलेटेड. It is non-modulated. Stele. That means pith is absent. No, modulated means pith. Example इसका present in few pteridophytes. Present in few. Protostele, it is the most primitive and simplest stele. It is non-modulated stele. Example, it is present in few pteridophytes. दूसरा टाइप है इसका स्पिनोस्टील. स्पिनोस्टील इट इज मेड्यूलेटेड. उसका अपोजिट प्रोटोस्टील का अपोजिट. प्रोटोस्टील जो है ये नॉन मेड्यूलेटेड है और स्पिनोस्टील जो है ये मेड्यूलेटेड स्टील है. इट इज मेड्यूलेटेड स्टील. एग्जाम्पल इसका है इट इज प्रेजेंट इन मोनोकॉट रूट. Spinostele, it is medullated stele. That means pith is present. Opposite to protostele. Protostele में होता है non medullated stele. तो एग्जाम्पल है प्रेजेंट इन
मोनोकॉट रूट। तीसरा है यू स्टील, ई यू एस टी ई एल ई, यू स्टील। यू स्टील क्या होता है? यू स्टील होता है type of steel in which vascular bundles are present in the form of ring. Type of steel in which vascular bundles are present in the form of ring, in the form of ring, in which vascular bundles are present in the form of ring. Example, it is present in dicot system and gymnosperm system. Gymnospermous system. फोर्थ है टाइप है अटैक ऑफ स्टील, ATACTOSTELE, अटैक ऑफ स्टील इन विच वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड। जो वेस्कुलर बंडल्स इसमें होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, मतलब इधर उधर तुम आसान छकराइत, डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए हेफाजर्ड मैनर, दैट वी कॉल्ड अटैक ऑफ स्टील, इन विच vascular bundles or scattered or we can say distributed in which vascular bundles are scattered or distributed in the ground tissue. Example है monocot system. Attack to steel in which vascular bundles are scattered, stated in the ground tissue. मतलब ये जो टिश्यू होते हैं अटैक टू स्टील छकराइत हेफाजर्ड मैनर्स में आए, that we call the attack to steel. Example है monocot steel. This was all about the today's lecture about steel. Thank you.